the dairy sector. And first and foremost, we'd like to thank all the member companies of Pakistan Business Council and other stakeholders who contributed and provided input to us in bringing this, putting it together and bringing the report and its findings to you today. I'll start us off with a quick overview of the agenda. Just to set the stage, so we'll be having opening remarks by Mr. Ehsan Malik, who's the CEO of the Pakistan Business Council. Then Harim, my colleague, will be presenting the findings of the report, following which we'll have comments by the Government of Punjab, by Mr. Osman Ghani, who's a farmer and who's on the ground. And then, of course, Mr. Amer Abdullah from Sapphire Dairies, who's yet to join us. And also Mr. Ali Ahmed Khan, the CEO of Friesland Campina, Mr. Awais bin Nasim, who's the MD of Tetra, and then we'll have closing remarks. We'll have a Q&A and then some closing remarks from Mr. Yawar, the chairman of Nestle Pakistan. So thank you again for being here. Just to lay out a few ground rules, we'll be taking questions only in the Q&A part of this webinar. So if there's any questions, feel free to post them on the chat box or raise your hand during the Q&A time. With that, I'd like to pass it along to Mr. Ehsan Malik for the opening remarks. Thank you. Okay, Assalamu alaikum, everybody. I think we're very delighted to have a very distinguished panel here with us. They're leading industry practitioners as well as, of course, policy shapers, policy influencers, and indeed policymakers also. I wanted to very quickly set the context in which we are talking today. Pakistan, as you all know, is going through a very challenging environment. I'm not really referring to the political impasse that we have in the country. I'm really referring to the economic challenges that we've been facing for the last several months, but particularly in the last few weeks. The current uncertainty has not helped in any way. The basic premise from which we are coming here today is to say that if a country wants to safeguard its sovereignty, it must be solvent. To be solvent, you have to be positive on two accounts. One is the external account, and the other one is the fiscal account. On the external account, you need to export more than you import, or at least your total inflow of foreign exchange must be greater than your outflow. And on the fiscal account, of course, your tax revenues should be adequate in order to be able to invest behind the socio-economic development. PBC for the last 5 years or so has been working under an overarching thrust, which we call Make in Pakistan. Make in Pakistan has got three main pillars. First of all, and that is really relevant for today's webinar, is what we call grow or grow better in the country. If we are able to grow enough and we get the right productivity, we will be self-sufficient in terms of our own food requirements. But not only that, we will also be able to export more. The second pillar, obviously, is manufacturing, and that is make more and make better. So if you have better products, they're more competitive, we're able to export, and we become less reliant on imports. And the last but not the least important is, of course, serve more and serve better. And this is not only about IT and IT-enabled services, but it's also about things like logistics, moving goods from one part of the country to another, and indeed from Pakistan to and beyond. We're very fortunate that today we have as many as 87 members, and there are about 2 or 3 on the annual, in the process of becoming members. And this is really the creme de la creme of Pakistan industry. So I will really stop at that. I'm not going to talk about the dairy industry because that's what the distinguished panel here is going to do, and hand it back to you, Saud, and then Harim, if she can then take us through the study that we've done. I just want to also say that as part of the Grow More and the Grow Better, part of the Make in Pakistan Trust, we've already done a piece of work on horticulture. We've done another detailed study on the meat industry. We are today launching the study on dairy. We have got one in the works on olive. We've got one in the works on honey.
Now these are of course niche parts of the total, but really at the end of the day, between meat and dairy, that is really the bulk of your agriculture sector in the country. So very important these two studies, but in particular horticulture or in particular today's dairy industry. So over to you, Saud. Ji, thank you, Ehsan Saab, and I'll be passing it over to Harim to walk us through the presentation. Thank you so much. Okay, so I'm Harim, and I'll be presenting the findings of our recently published study on the dairy sector, which actually highlights the opportunities of increasing the production and supply of milk and its value-added products. So before we begin, the first step is to look at the issues that limit the production and supply of milk in Pakistan. So the first issue is of seasonality in demand and supply of milk, which results in shortage of milk during the summer months. So what actually happens is that the demand of milk increases in summers because the consumption of dairy products increases, and on the other hand, the supply of milk decreases because the availability of green fodder decreases during the summer months due to the natural progression in the lactation cycle. And the heat stress on the dairy animals, the milk yield falls, and therefore the supply of milk reduces. So this gap in demand and supply can be narrowed by increasing milk yield, by adopting better feeding and herd management practices, and also by producing more milk. I will give an example of Turkey and China over here. The processing companies in Turkey and China, they produce milk during the flush season and reconstitute it into milk and other value-added products during the lean season to meet the high demand. In addition to the issue of seasonality, in Pakistan, we have a productivity issue as well, where the milk yield of our local cattle breeds is 4 times less than the high-yielding international cattle breeds. As you can see in this table, the milk yield of Pakistani cattle is lower than that of India, China, and Turkey. 2 other reasons why milk yield is low in Pakistan is the inadequate artificial insemination and vaccination services. So artificial insemination is actually unavailable to many farmers because of the absence of pedigree and unavailability of germplasm to the farmers. Similarly, a lot of farmers do not have access to vaccination services because there are no mass vaccination programs, and the registration and approval process for the imported vaccine is quite cumbersome, which adds to the costs. So in addition to the issue of seasonality and the yield, which impact the production and supply of milk, we also need to look at the issues in processing, which actually stands at just 10% of tradable milk at present. The remaining 90% is unprocessed, whereby the chance of adulteration increases. Furthermore, 15% of the total milk estimated at 1 trillion rupees is wasted every year. So in order to reduce the chances of adulteration and wastages, we are proposing a solution, which is processing of milk into value-added products. And why we are saying that processing is the solution, because number one, there are very high chances of adulteration in unprocessed milk, and processed milk is relatively safer to consume and easier to store and transport. What we need to do to increase processing, we need, the first and the foremost thing is to implement and enforce the pasteurization law, which will have a positive, which will impact control the adulteration, reduce wastage, and increase the production of milk and value-added products.
So let's have a look at other milk producing countries and how they deal the sale of raw milk. So overall, countries like Australia, New Zealand, EU countries, US, uh, either the sale of raw milk is illegal or it is highly regulated, whereby the farmers need to be registered and they're only allowed to sell raw milk at the farm after it has undergone a series of quality tests directly to the farmers without the presence of any intermediary. Um, Apart from these countries, let's talk a little bit about India, where the pasteurization law was implemented in the early 1960s, after which the dairy cooperatives were also established. So these cooperatives actually pooled in the resources and to set up the pasteurization units, which actually aided the implementation of a pasteurization law in real sense. In addition to milk, cheese is a value-added product whose demand is growing in Pakistan because of increased demand by the food chain restaurants, imposition of duties, which actually gave an opportunity of import substitution and has recently increased the processing of cheese. Apart from cheese, milk powder is another value-added product whose demand is growing globally, as you can see in this figure. And why is that? Because milk powder has a longer shelf life. It's very convenient to store, transport. It's actually widely acceptable to be used in infant foods. And as I mentioned earlier, it's widely used. It's widely used to reconstitute it into milk and value-added products during the shortage months. So in Pakistan, let's talk a bit about Pakistan. We imported 75 million worth of milk powder in 2020. And we usually import it during the summer months to fill this demand supply gap. And we use this milk powder to reconstitute it into packaged milk. So let's move on and see how the government has intervened in the sector. The government introduced the livestock development policy back in 2007. It is quite a detailed policy, but it needs to be revised and implemented in its entirety. Apart from this policy, the government has introduced several programs and initiatives. They also need to be, scaled up for a long term, so that they reach at least most of the dairy farmers to have a considerable impact on milk yield and milk production and processing. In addition to this, the government recently reinstated the zero rating on packaged milk, which needs to be continued because it's aligned with the global practice. Here I'll give an example of India, where the pasteurized milk is zero rated, and in UK as well, the packaged milk is zero rated. So it's general global practice. Let's move on and see how the regional economies like India, Turkey, and China, they have increased the production of milk and processing of value-added products and export as well. First, let's look at India. So India actually implemented long-term programs to increase milk production. As you can see in this figure, it has been steadily increasing over the past many years. So what India did was they introduced this Operation Flood, and it was implemented across India over a period of 26 years. A national dairy plan was implemented over a period of 8 years, and a nationwide artificial insemination program. It is still in operation, and it is launched in 600 districts. So the key in case of India is implementing long-term programs. Let's talk a little bit about Turkey and how Turkey achieved the highest dairy export growth in the region. Turkey focused on firstly increasing the production of milk through improving yields by adopting better breeding and feeding systems.
Turkey focused on increasing the production of value-added products by subsidizing producers and imposing 180% of import duty on milk powder. It also focused on formalizing the sector and enabling access to markets like China, which is the largest dairy importer, with imports constituting of 30% of the domestic market. So China became the largest dairy importer because there's a very prevalent issue of stunting in China, and because of the melamine milk scandal that happened in 2008. So this actually resulted in China moving to imports. China signed trade agreements with New Zealand, Australia, and USA, and they actually prefer using milk powder and reconstituting it into milk and value-added products for wider availability to address this issue of stunting. So after discussing these three countries, we can conclude that, as you can see in this table, the milk is expensive in Pakistan if we compare it with India, China, and Turkey. Why? Because firstly, productivity is low. The dairy farmers do not have economies of scale because the farms are very fragmented and the herd size is small. Cost of fodder is very high. The fodder actually is it is like 60% of the total cost of production. So it has a very high impact on the total cost of production. And lastly, the low level of farm mechanization. So all these factors, they actually increase the cost of production, which makes milk expensive in Pakistan. It is not competitive. And as you can see, the milk price in Turkey is the lowest, and that is why the Turkey has achieved this export growth, because it's competitive. So in light of all the analysis, the issues, the lessons learned from the regional economies, PBC recommends to develop a national dairy plan, considering that dairy is a provincial subject. So this plan needs to be formulated by the federal and the provincial governments in coordination, and will be implemented by the provincial governments over a long period of time. And the plan should include these 9 pillars, including, first of all, conducting the livestock census, which every 5 years, which is important to formulate sector-specific growth strategies. Impose export restrictions on animal feed to ensure that sufficient is available for the local dairy farmers at a low cost. Increase the import duties on milk powder, but of course this is actually subjective. It is actually dependent on first Pakistan producing more milk and milk powder. Enforcement of the minimum pasteurization law is very important. Actually, easing the import of vaccines and wider access to vaccination for diseases is very important. Pakistan needs to continuously carry out awareness campaigns regarding the harmful effects of adulterated milk and the environmental impact of the dairy activities. And lastly, subsidized credit needs to be provided to the farmers, small and medium-sized farmers, so that they can expand and benefit from economies of scale. Now I'll actually pass it on to South to Sure, Harim, thank you so much. Thanks for walking us through the broad contours of the report. However, when we speak of dairy, we shouldn't ever miss out the social and environmental impact that this sector has in general. That's extremely critical because dairy means nutrition, right? And when we talk of nutrition, we should be focused from a policy perspective on what impact we're having on the growth of our population in terms of their health. So if we speak of the numbers in Pakistan, if we look at them, at the moment, the per capita consumption of milk in Pakistan is 0.26 liters, which is on the lower side. And as a result,
we're seeing that about 40% of the children who are aged 5 or less are stunted. So there's a high level of stunting, which of course emanates from the fact that about 70 to 75% of the population is getting not enough caloric value which they can from milk. Another reason to emphasize or aspect to emphasize here is that the cost of milk is still very high, as Harim said in her part of the presentation. An average household is spending about 2.5 times more on milk as compared to wheat. Wheat, we know, is a staple. So that only means that the cost of milk, which is being borne by a household, needs to be brought down. If we speak of what solutions globally have been taken in terms of for improving nutritional values provided by milk to the children, school milk distribution programs have worked really well. And this is highlighted in the report also, so it can be kind of perused over there. Now, I'd also want to switch over to the environmental side of things. So the environmental side of the dairy sector, or the environmental aspect, impact of the dairy sector, is also now globally getting more attention, for the simple fact that the dairy sector with the cattle, there's a significant emission of greenhouse gases, particularly methane. That's adding to the global warming, if you will. So, you know, there is now a global kind of approach and an effort to reduce these greenhouse emissions. Australia being one, for example. Australia has committed to reduce the greenhouse emissions from the dairy sector by 30% by the year 2030. It is also, you know, kind of important to raise here that one of the approaches that are being applied to reduce these greenhouse gases is to improve the yields. And how that helps is that when the yields get better, the conversion of feed into milk improves, and which means that lesser greenhouse gases are emitted into the environment. Just to give you a number, with a 65% improvement in yield leads to about 16% reduction in the greenhouse gases. And the last point I want to make here is that the dairy sector also has a direct link to, you know, to protecting water from contamination. So to take measures which will prevent the manure from finding its way towards water reservoirs. So that's also an important aspect to consider while we're thinking about the environmental impact of the dairy sector. With that, I'd like to thank the audience for your patient listening as we walk through our analysis and our findings. I'd now like to walk us towards the part of this webinar whereby we'll be inviting our panelists to jump in and give their remarks. We've allocated about 5 minutes to each panelist, so I'd request all the panelists to kind of try and limit your comments to that time frame. And the first speaker I would like to invite today for remarks is Mr. Rao Usman Ghani, who is a progressive farmer, and he'll be speaking to us about his experience in managing his farm, any challenges, and what your expectations would be from a policy point of view. What measures can the government take? Over to you, Mr. Usman. Thank you. Thank you very much. I want to talk in my native language, Urdu, if you don't mind. Please, जी, उर्दू में बात कीजिएगा. Thank you. बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट में ही अपनी बात को मुकम्मल करूं. बुनियादी तौर पे जो सारी बातें हमने यहाँ पे की हैं वो ज़ाहिर स्टैट्स के लिहाज से तो आपके पास बहुत अच्छी एक वर्किंग होती है और उसके ऊपर आप काम करते हैं. अब जो बुनियादी मसला है एक फार्मर के एंड के ऊपर जो मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा कि वो ये है कि ये सारे के सारे हकाइक जितने भी आप बयान कर रहे हैं या जो भी मिल्क यील्ड के हवाले से या हमारे मसाइल के हवाले से, उसकी कोई प्रोजेक्शन जो है वो हमारे सामने नहीं आ पाती. तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारा डेयरी सेक्टर जो है वो मेजरेबल अप्रोच से हट के एक जो है बिल्कुल ही ऐसी अप्रोच पे चला गया है कि जिसके अंदर कोई क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है ना वो अपनाई नहीं जाती.
मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मैं जब अपनी इस फील्ड में बदल के इस फील्ड की तरफ आया, मैंने एक डेयरी फार्म स्टैब्लिश किया। तो यहाँ पे हमारे लेवल के ऊपर, स्मॉल लेवल के ऊपर, ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि चीज़ों को मैयर करने के लिए टूल्स अवेलेबल नहीं है कि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि कैसे चीज़ों के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। तो अब बुनियादी मसला ये है कि इंसान हमेशा बेहतरी उस जगह के ऊपर लेके आता है कि जहां उसके सामने प्रॉब्लम्स आए। मिसाल के तौर पे हमने जो यहाँ पे आके एक चीज बनाई, वो ये थी कि आपका जो हर चीज है वो मैयर्ड फॉर्म के अंदर एनिमल को सर्व की जाए, और एनिमल को मैयर्ड फॉर्म के अंदर सर्व करने के बाद उससे जो आउटपुट आई है उसको भी मैयर किया जाए, और हर चीज के हवाले से आपकी पर डे के ऊपर पर लीटर कॉस्ट जो है वो आपके सामने आ रही हो। तो अब बुनियादी मसला ये है कि डेयरी सेक्टर में इतना बड़ा डाटा अवेलेबल है, इतना बड़ा डाटा मौजूद है रॉ फॉर्म में, जिसके ऊपर एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। अब दुनिया के अंदर जो सारी मुल्कों ने इसके अंदर प्रोग्रेस की है, उसकी वजह भी बुनियादी यही है कि उनका फार्मर जो है वो एजुकेट हुआ है इस हवाले से कि उसे असल में क्या करना है। अब इस वक्त जो हमारे एंड पे चैलेंज ये है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन को अपनाना है, जिसके नतीजे के अंदर हम जो है वो एक अच्छी डेयरी स्टेब्लिश कर सकते हैं। अब आप देखें कि आज हमारे यहाँ जो कैलकुलेटिंग अप्रोच के ना होने की वजह से हम टेक्निकल लोगों को हायर नहीं कर पाते। तो अभी मैं अगर हिसाब लगाऊं तो बुनियादी तौर पे, जैसे कि हरीम बात कर रही थी कि 60% जो है फीडिंग कॉस्ट है हमारी पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में, तो वो 60% जो है वो रिड्यूस हो सकती है अगर आप एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है परमानेंट अपने पास अवेलेबल रखें। तो उसके नतीजे के अंदर आपकी वो कॉस्ट वो खुद बियर करता है, उसकी सैलरी और उसकी वो तमाम चीजें जो है उसमें से निकल जाती हैं। इस वक्त हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है कि हम क्या करें और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, उसका फिगरेटिव डाटा जो है वो हमारे साथ, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा टूल हमें जरूर चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से या डाटा कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से जो हमारे जो है वो काविंग इंटरवल्स को, हमारी फीडिंग को, हमारी इनटेक को, हमारे ड्राई मैटर को, हमारी प्रोटीन को, इन चीजों को कैलकुलेट कर रहा हो, रन टाइम के ऊपर हमें बता रहा हो चीजों की कि भाई आप ये वाला जो काम कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट सही आया और इसका गलत आया। जाहिर सी बात है कि आप एक ऐसी मार्केट के अंदर हैं कि जहां पे बिल्कुल ही ऐसी अप्रोच है कि बस उठाया, सर्व कर दिया और उसके बाद उसको कोई कैलकुलेट नहीं किया जा सका। तो आप देखें कि बाकी सारी मार्केट जितनी भी है उनके अंदर आउटपुट जो है वो वंस इन द टाइम आती है, यहाँ पे डेली की बेसिस के ऊपर आउटपुट है। तो एक बात जो है वो बुनियादी बुनियादी तौर पे जो मैं करना चाहूंगा वो ये वाली है कि आप अगर इस चीज के हवाले से हमें कुछ हेल्प कर सकें, आप तमाम हजरात जितने भी बैठे हैं एक अच्छी पोजीशंस के ऊपर हैं, कि हम उसके एनालिसिस परफॉर्म कर सकें कि बेसिकली हम अपने इस बिजनेस के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या कमा रहे हैं, हमें इसके अंदर कुछ हो रहा है, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ सके कि हम ये काम कर भी सकते हैं या करना ये दुरुस्त डायरेक्शन के अंदर भी है कि नहीं है। होता ये है कि बहुत अरसे के बाद जाके एक छोटे बिजनेसमैन को ये पता लगता है कि वो चीजों के अंदर जो है ना खराबी की तरफ जा रहा था, उसकी डायरेक्शन जो है वो सही नहीं थी। तो बुनियादी तौर पे जिसके हवाले से मुझे बात की गई थी कि इन इन चीजों को फोकस में रखना है, तो मैं अगर उसके ऊपर बात करूं कि दूध की पैदावार के हवाले से, कि दूध की पैदावार हमने कोशिश की है कि हमने दो तरह के एक्सपीरियंस किए हैं, एक लोकल एनिमल भी और इम्पोर्टेड एनिमल भी। तो हमने लोकल एनिमल से भी जो है वो डिफरेंस जो है हमारा तकरीबन 3 to 4 लीटर्स का रहा है। लोकल एनिमल से मुराद वो एनिमल जो लोकली इंसेमिनेट हो के जो है नियर टू प्योर एनिमल हमने अपने फार्म में एक ग्रुप उसका भी स्टेब्लिश किया और दूसरा भी जो है ना वो रखा। तो दोनों का 3-4 लीटर के डिफरेंस को जो है ना दोनों का जो डिफरेंस है सिर्फ 3 से 4 लीटर का रह गया। तो आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो एक अप्रोच ये बनाई जाती है कि सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड एनिमल से ही हम चीजों ले सकते हैं। यकीनन दूध की पैदावार में जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जेनेटिक्स की कैलकुलेशंस कहाँ है। मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान के एनवायरनमेंट की बात करें
तो पाकिस्तान के जो पोटेंशियल इस वक्त खड़ा है उसकी कोई कैलकुलेशन मौजूद नहीं है। तो जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे तो दो चीजों को कंपेयर कैसे कर रहे हैं, ये बात नहीं समझ आती कि हम कंपैरिजन में दोनों को लेके चले जाते हैं लेकिन हम उसके बेसिस को नहीं समझ पाते। तो हमने ये काम किया, अक्सर लोगों ने, एक पंजाबी में एक बात यहाँ पे मशहूर हो गई कि तुसी जो है कूड़े कबाड़ वाली चीजों को एक कोठी च रखना चाहते हो। तो मजाक में सब लोग हमें ये कहा करते थे, लेकिन हमने ये किया कि हमने उस ब्रीड को जिसका जेनेटिक पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं था लेकिन उसके फिनोटाइपिक ट्रेट्स जो है वो बहुत अच्छे थे, उसको एक बेहतर माहौल दिया, एक स्टैंडर्ड शेड दिया, सफाई सुथराई के लिए मैकेनाइजेशन को इन्वॉल्व किया, टेम्परेचर को कंट्रोल किया, खुराक को बैलेंस किया, एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन को बैलेंस किया, और इसी तरह से हमने अपनी मैनेजमेंट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया कि हमने ये कोशिश की कि हम अपनी मैनेजमेंट के ऊपर जो काम जिस स्टाइल में जिस वक्त में होना तय हो गया है वो उस तरीके से हम परफॉर्म करवाएं। और इसमें हमने एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स जो है बड़े छोटे लेवल के ऊपर हमने हायर करने की कोशिश की। मैं सिर्फ 2500 लीटर का फार्मर हूँ और सिर्फ तीन एक सौ जानवर मेरे पास इस वक्त हर्ड में है और मिल्किंग एनिमल 100 के तकरीबन 90 के करीब मेरे पास मिल्किंग एनिमल है। इसके बावजूद भी मैंने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर खर्चा करते हुए नहीं सोचा कि ये ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मुझे पे बैक करेगा। तो हमने कोशिश की कि एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक रिप्रोडक्शन वाले डीवीएम डॉक्टर जो है वो परमानेंटली अपने फार्म पे रखें। अब देखिए कि जब डाटा हमारे सामने आया तो एक जानवर को अगर इन टाइम उससे अच्छे काविंग इंटरवल में बच्चा ले लिया जाए तो वो कभी भी अपना दूध नहीं गिराता। जानवर के 305 दिन है दूध देने के, वो पहले 150 दिन में पीक की तरफ जाता है, अगले 150 दिन में डिक्लाइन की तरफ आता है। तो आप अगर उस जानवर को लेट इंसेमिनेट करेंगे, लेट प्रेग्नेंट करेंगे तो मिल्क यील्ड जाहिर सी बात है वो आपका वो काविंग इंटरवल 365 से उठ के जो है वो ऊपर चला जाएगा, 400 डेज पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने कोशिश की कि हम इन चीजों को जो है वो इम्प्रूव कर सकें। बाकी जो खुराक की फरहमी के हवाले से बात की गई है कि हमारे पास फोल्डर्स के अंदर जो चीजें अवेलेबल होती हैं तो उसमें मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि बेसिकली हम प्रोड्यूसर्स हैं। तो हमेशा प्रोडक्शन के अंदर जो मैनेजमेंट साइंसेज पढ़ने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि या प्री प्रोडक्शन होती है या पोस्ट प्रोडक्शन होती है। तो आपको किसी एक स्टेप को लेना पड़ता है। इस वक्त पाकिस्तान के डेयरी फार्मर की ये नीड है कि वो दोनों में से एक टाइप को जरूर चूज करे, या प्रोडक्शन के बाद वो आफ्टर मार्केट जो है सेल्स की तरफ जाए, या वो प्री प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल को पैदा करने की तरफ वो चला जाए। तो एग्रीकल्चर सेटअप जो है वो इससे बिल्कुल लिंक होना चाहिए, इंटीग्रेटेड बिजनेस है कि उसके बगैर जो है वो डेयरी को करना वो मुमकिन नहीं रहा। तो अच्छा, मैंने ये अपने राव साहब, सॉरी टू इंटरवीन, आपके आपके पास एक और मिनट है, काइंडली अगर आप अपने कमेंट को अभी समराइज कर दें ताकि हम फिर अगले पैनलिस्ट के पास भी जा सकें। थैंक यू सो मच। बेसिकली ये है कि हमने 55% सेल्फ प्रोड्यूस के ऊपर जो है अपना फार्म चलाने की कोशिश की, जिससे जो है हमने 50% ऑफ मिल्क कॉस्ट, फीडिंग कॉस्ट जो है वो करने के हवाले से हमने काम किया। तो बाकी ये है कि एक्सटेंशन सर्विसेज के हवाले से हमें सपोर्ट रहती है कंपनीज की तरफ से, ये सारी गाइडेंस वर्बली मिलती रहती हैं। एंग्रो, फ्रीजलैंड, कैंपिनिया या जिनको हम मिल्क सप्लाई कर रहे होते हैं उनकी टीम की तरफ से हमें हेल्प मिलती रहती है। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से हमें असिस्टेंस मिलती रहती है वैक्सीन वगैरह के हवाले से। तो अक्सर होता ये है कि हम उनके प्रोसेस के ऊपर जो है ना बाज़ों का बिलीव नहीं कर पा रहे होते। तो प्रोसेस बेहतर करने के हवाले से लाइफ स्टॉक सेक्टर में काम करना चाहिए। जैसे वैक्सीन के अंदर हम बात करते हैं कि उसकी कोल्ड चेन अगर मेंटेन ना हो तो वो हमारे तक पहुंचने तक खराब होने का खतरा होता है। तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि इस प्रोसेस को हमें लाजमी अश्योर किया जाए कि ये हमारे तक पहुंचने तक बिल्कुल ठीक हालत में है कि गलत हालत में है। तो बुनियादी तौर पे मैं समराइज इस तरह से करूंगा कि अगर हम अपनी कैलकुलेटिंग वे ऑफ थिंकिंग जो है अपने फार्मर को ट्रांसफर कर देते हैं तो इस पूरे के पूरे बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा कि उसे सोचने का मौका मिलेगा कि मेरी डायरेक्शन ठीक है कि नहीं है। तो इसके अंदर हेल्प आउट करना हमारे तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से लीड है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया राव Usman Ghani Saab. Thank you for giving your comments. I would like to invite Mr. Amer Abdullah, Director, Sapphire Dairies, to give his comments. And primarily, we're looking to you, sir, for enlightening us more on the milk yield side. कि आपका जो corporate farm है, उसमें how have you, what has your experience been, and how can we learn from it? Thank you. Thank you very much. I want to really talk about the role of the corporate farms in uplifting of the dairy sector. And this whole concept of corporate farms started around 2008. And today there are about 15 such farms, having herd of over 3,000 cattle per farm. And all of these farms, 15 farms, are very efficient, have brought in the world-class practices, have reached milk yields of 30 liters and above per annum. And it has not happened overnight. You know, when in 2008, you know, all of these one by one, when they were investing, they brought in imported cattle. And at that time, most of the cattle was imported from Australia. And at that time, the yield was less than 20. And with better practices, with improved genetics, with use of better semen, artificial insemination, now the milk yields have crossed 30, and for almost all the farms, and it's increasing every year. It's you know, so it's in the coming years it's going to improve even further. These farms, you know, 2008, I still remember, you know, when we started, there was no silage. You know, it was not available. The concept of silage was not there. And so we brought in this concept of silage, and today bale silage is readily available. Almost everyone uses it. Not only the corporate farms, even the small farms use bale silage. Similarly, alfalfa hay was not grown. Today, we are exporting alfalfa hay, you know, and using, almost everybody's using. So all these things, you know, the corporate farms were able, because of their volumes, because of their ability to bring in foreign consultants, expat management, so has contributed tremendously to improve the milk yield, not only for the bigger farms, but also for the smaller farms. And unfortunately, you know, there are just 15. In 15 years, you know, we will just have 15 of such farms, you know, whereas ideally there should have been hundreds of such farms. And I think one of the things which should happen to encourage further investment in this business is subsidized lending from State Bank of Pakistan, like they do for the export sector. And if we are really able to get another 100 farms in this business, you know, it will completely change the landscape of dairy. Also for the medium and small farmers, because the technology also, there is a trickle-down effect to them. Also, you know, it was a bit strange because, you know, what import of cattle has to be encouraged. Better semen has to be encouraged. Lately, the government has imposed sales tax on not only on import of cattle, import of semen. So we are talking about improved productivity, better genetics, but it's counterproductive if we start imposing taxes on both import of cattle as well as semen. So this, my recommendation is that it should be, you know, we should request the government to look into this. Secondly, you know, I think one of the biggest impediments in the growth of the sector is the cost of milk. The prices are very high, as we have seen in the statistics also, that the Pakistani milk prices are one of the highest in the world. You know, recently I was discussing with one European company for a joint venture for cheese manufacturing. And when we made a comparison, they said, why do you want to make cheese in Pakistan? You know, why? Because it's cheaper to make it in Europe. You know, why can't we just make it in Europe and import it in Pakistan? Primarily because milk prices in Pakistan are very high. And why is it high? It's high because of, mainly because the feed prices generally are very high, expensive in Pakistan. And lately,
with these export of feed items, it's become even more expensive. Maize, 2 years ago, if we compare the cost of maize, it's doubled. And that is obviously resulting in further increase in milk prices. On top of that, if you look at the taxes, the import, out of many feed items, the feed additives, there are also major components which is imported. The premixes to improve the milk yields. And almost all these feed items are heavily taxed. And I was just looking at the data, the taxes are close to, if you include custom duty and sales tax, it's close to 35%. So if I make a calculation, it's costing 7 to 8 rupees a liter on just tax, so this sector is being heavily taxed and the feed is being taxed, and as a result, the milk prices are very high. So, this has to be looked into, that we have to somehow understand, how to bring these prices down, and maybe there's no sense in having taxes, import taxes on feed items. Secondly, talking about energy rates, dairy for some reason is not classified as agriculture. So there's a special tariff for agriculture, but dairy does not fall into it. Dairy is agriculture, so it should be classified as agriculture. And lastly, one of the biggest risks for the livestock farm or dairy farm and other various diseases, we have too focused on FMD, but there are many other diseases. This year there was this new disease of lumpy skin, and we have to be proactive. Today, if we have to import a vaccine, we have to go through draft, which takes years to get an approval. So it has to be, if we have to really help this sector, then it should be, the disease, lumpy skin disease came into Sindh several months ago. It's now entering, in Punjab. Nothing has been done. So the role of the bigger farm can be, that if we are more proactive and we have the ability to import all these vaccines, but then if we go through the bureaucracy of the government, then it just doesn't work. So this is another issue. So basically, that in my view, just to summarize, I think larger farms can play a very important role in bringing technology and being proactive in many things. So the larger farms have to grow, and also, the unnecessary taxes on feed items have to be abolished if we want to really reduce the milk prices. These farms, the larger farms are very efficient. So this concept of improving yields and reducing milk price will not work unless we practically do something to reduce the cost of feed. Thank you. Thank you so much, Amer Saab. Thanks for your comments, and you've come through loud and clear. And thank you so much. I'd now like to invite Ali Ahmed Khan Saab, the CEO of Friesland, Campina, Engro, Pakistan, to please sir, give your comments. We're looking to also to enlighten us, amongst other things, about adulteration of milk and also the wastages that happen along the value chain in the unprocessed milk value chain. So if you kindly sir, enlighten us and about all these things. Thanks. Okay. Thank you, Saud. First I'd like to just talk about your report and about the presentation a little bit. And you pointed out countries like Turkey and India to some extent. There are other examples, Malaysia, Egypt. Now, what is common really in all of these examples is a commitment, and that commitment primarily comes from the government, but then also from various sectors who are involved, and that means the processors, it means the farmers, it means the consumers. You need a whole of system approach, really led primarily by the government in promoting
processed, nutritious dairy products, right? Now, I was sitting through a presentation yesterday where I was told that the pasteurization law was passed in Chicago in 1908. And after that, in Chicago, unprocessed milk was not allowed to be sold. Right now, here we are sitting in 2022, and in Pakistan, most consumers, the majority of consumers, believe that unprocessed loose milk is actually more healthy and is more beneficial in nutrition terms. Now, that's a crime. That's a crime. And you asked me about adulteration. We are doing a research which we will publish in the next 2 or 3 months. But our belief is that over 90% of the milk in this country is adulterated and contaminated and not fit for human consumption, right? Not when it comes out of Rao Saab's farm or Amer Abdullah Saab's farm, but by the time it gets to the consumer. And this is something that the government needs to educate consumers on, and to tell them that rather than getting nutrition, they're actually being poisoned, right? And divert the consumption of loose milk towards processed milk. And once that happens, believe me, the ecosystem will start to function, right? And the ecosystem will start to move. And when that demand is generated, when consumers come towards processed milk, processors will address the issues of affordability. They will address the issues of wastage, because we are the ones who actually run a formal supply chain. So we are the ones who reach the farmers, make sure that we pick up the milk from the farmers without wastage or without damage, and that it is transported chilled to our processing units, and then safely towards consumers. So the whole ecosystem needs to work, and it needs to start with government creating awareness about loose milk versus packaged milk. It needs to start then with legislation and regulations, and they're being enforced. It needs to start with some kind of fiscal benefits in the early years towards processors, to allow them to invest in the ecosystem and to invest with farmers to improve quality and yield. And of course, as I said, it needs to also have consumers' commitment to invest in nutrition and to drink nutritious milk, which I'm sure will happen if governments intervene in terms of educating consumers. So the examples that you gave, the entire society, led by government, but also by processors, by farmers, they've moved towards the process industry in an organized way. And that's what needs to happen here. And when that happens and that investment takes place, we will address issues of improvement in yields, of affordability, and the impact that it will have on nutrition and human capital, potentially the impact on increased yields. And I've spoken about the fact that Pakistan has some of the lowest yields in the world. You said we were our cow on the average is equal to 4 cows. My research says 7. So 7 Pakistani cows is equal to 1 American cow. Now that's a shocking statistic, but that's also a fantastic opportunity. We are the 3rd or 4th largest milk producing country in the world with such low yields. Imagine what would happen if we could increase our yields. We say a Pakistani cow has yields of about 5 liters per day. Imagine if that 5 goes to 7, right? Imagine that's a 40% increase in the quantity of milk in this country. Imagine the impact on the GDP, on the farmers' livelihoods, on our ability to export to the region. And our calculation shows that the potential to export is about $40 billion in this region, stretching from the Middle East to China. So what we need is a whole of system approach led by the government in terms of regulation and legislation, but then also a commitment from processors to invest in the ecosystem, a commitment from farmers to improve yields and productivity, and also
taking consumers towards processed dairy? Bill, thank you so much, Ali Saab. I think that makes a lot of sense, and I would definitely echo what you just said about the whole of country approach, and we definitely see that in countries like China and Turkey and India. They've taken decades to get to where they are, but they've been on track. Thank you. Awais Saab, over to you for your comments, sir. Thanks, Saud, and thanks, Ehsan Sab, for letting PBC go into this sort of a report. I think after a very long time, I've seen such a comprehensive and a formal report from a institution which has its impact and say, and I hope that we all as a dairy industry can take this report forward and evolve it into something with the help of the government, because all the things which have been said by my colleagues, esteemed colleagues, you know, the nutshell is that we don't have a regulation. Imagine, as Ali and Khan Sahab said, 4th or 5th largest producer, and we don't have any regulation around it, minimum pasteurization law or whatever. That single thing, although we will keep on trying to do a lot of things in our isolation, Sapphire will do, Engro will do, Friesland will do, all these farmers will do. But if you cannot create those horizontals by the government, by the infrastructure, I think it will be a very, very long haul. And this is the right time to intervene into one of the most ignored sector, which has one of the biggest potential as well. As Ali is saying, that imagine if you just increase the yield from 5 to 7, doodh ki nehre beh jayenge yahan pe literally. And how we want to take this forward, I think all issues have been very well covered in the report. And so from a packaging company perspective, I would say I was actually invited by Razak Dalsam in one of the meeting in tariff rationalization. And we were shocked to find out that the raw materials of packed milk is being taxed at 15%, whereas a lot of other industries are being taxed at 2% or 3%. So, you know, there's a dichotomy here. On one hand side, the government is trying to promote the packed milk. On the other side, they have incredible amount of duties on the raw material, which makes the cost even higher as well. So overarching approach, which should cut across multiple sections of the industry, of the dairy sector. There's like what import of the foreign, there's a gene pool and all that stuff, vaccination, everything. There should be a comprehensive. One of the problem, I think, South, which we need to mention probably, because when you go in from one government department, then another comes in, there should be one window operation from the government. Somewhere it should be very, very categorically that it should not be have to deal with 10 different agencies or 10 different authorities coming into the play with all these things. It should be like one window operation for a farmer who doesn't have to go with a lot of things as well. So, and in the summary, I think it's a good step forward. We should all try to refine it. And one more thing, I think one other thing which I've been thinking about, last seminar also said, the data which we have in Pakistan, it needs to be, I think, verified. Imagine 60 billion liters of milk, if it would be produced in Pakistan, it would not be a milk short country. We don't have to import. So there is something we need to correct. And as Usman Ghani Sahab was saying, if we don't have that basis right, we don't know where we are. How will we go where we want to go? And number one and number two, as Abdullah Sahab was saying, that the yield needs to be increased, because one other beast which is lurking in the dark is urbanization. The speed with which we are urbanizing the country, it will be a very difficult thing to find out these farmers, small dairy farmers, will they disappear or will they come together in a larger herd shape or in a cooperative sort of a thing? We should facilitate that process as well. Take it head on. Right now is the time to take on to these challenges with the help of the PBC report. Thanks a lot. Thank you so much, Vesab. I think those are very, very astute comments. Obviously, regulatory reform is something we're struggling with across the board in different sectors, but I hear you that that is something that's also required in the dairy sector. Thank you so much for that. We're going to invite Mr. Khalid Mahmood, who's the Additional Secretary in the Livestock Department of the Government of Punjab. He was to join us as a panelist, but he is in the audience. So I'm going to just open his mic so that Khalid Saab can make his comments.
We had initially planned for Khalid Saab to speak in the beginning, but I think it's worked out better that now he's going to jump in at the end, because now that he's heard us all speak, he can come in and give the government perspective on where policy is as far as dairy is concerned. Khalid Saab, can you hear us? Thank you, ji. Sajasa, thank you, ji. I'm Khalid ji. Khalid Saab, welcome to the webinar, ji. We're glad to have you. Please go ahead, and we look forward to hearing from you, ji. Ji, बहुत शुक्रिया जी. Thank you, Sajasa. Actually, I was just really enjoying the discussion and the views of the different panelists. Actually, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट में थोड़ा सा ये होता है कि हर वक्त कोई ना कोई यहाँ पे वो एक इमरजेंसी सी चल रही होती है हर वक्त. तो आई वाज ट्राइंग टू के मैं थोड़ा सा निकल के वो भी कर रहा हूँ, लेकिन आपने कहा तो मैं बैठ गया, मैं उधर थोड़ा सा रुक गया हूँ. अच्छा, मैं सिर्फ दो तीन चीजें आपसे मैं गोशगुजार करना चाह रहा था कि गवर्नमेंट का रोल जो होता है हर चीज में, डेफिनेटली हमने तो अपने लिए एक बड़ा आफ्टर बड़ी थोरो डिलिबरेशंस एंड डिस्कशन हमारा इन हाउस करने के बाद हमने एक पिछले लास्ट फ्यू ईयर्स से हमने कहा जी वी विल बी रिमेन एज ए फैसिलिटेटर एंड, और हमने कोशिश करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर को मैक्सिमम जो है वो हम उनको फैसिलिटेट करें और उनको डेयरी सेक्टर में, नॉट ओनली इन द डेयरी सेक्टर, सारे लाइवस्टॉक सेक्टर में हम उनको आगे लेके आए. सिर्फ अपने हमने गवर्नमेंट में जो है जो कोर पब्लिक गुड्स हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर का कंपैरेटिवली थोड़ा सा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है, तो हम सिर्फ रहे प्राइवेट सेक्टर हम पर, ये हमारे मिशन का और हमारे बिल्कुल जो हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस आपने नए बनाए उसमें हमने इसको बड़ा अहमियत दी हुई सारी चीजों के ऊपर जी. अब डेयरी के ऊपर अब देखिए हमारे एक ही मकसद होता है जी, प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट के लिए हमने बात करनी होती है और उसके डिफरेंट तरीके पे हम करते हैं. गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट जी हम ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे भी जाते हैं. अब ब्रीड इम्प्रूवमेंट में आगे डिफरेंट उसके हमारे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी है, प्रोजेक्ट टेस्टिंग प्रोग्राम भी हमारे डिफरेंट स्टेजेस पे हैं वो चल रहे होते हैं जी. और उसके अलावा एक्सोटिक सीमन की इंपोर्ट जो है वो भी आप सब लोग माशाल्लाह बड़ी तरह समझते हैं. उसमें डिफरेंट राय जरूर हैं, आई अंडरस्टैंड कि उसमें जो मस्ट हैव डिफरेंट आपका उसमें होगा कि गवर्नमेंट को उसमें आना चाहिए या गवर्नमेंट को उसमें प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट को एक्सोटिक सीमन की इंपोर्ट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. जैसे कि मैं खुद बता रहा हूँ कि हमारी कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर का मैक्सिमम जो है वो हम उसको लेके आए. तो अब एक्सोटिक सीमन के साथ साथ सेक्स सीमन की टेक्नोलॉजी पे भी हमने अभी लास्ट इसी हफ्ते हमने we have very detailed discussion with some of Mr. Irfan Habib न्यूजीलैंड में जो he is presenting the STG genetics, उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनसे भी हमारी मीटिंग हुई है. तो एक तो उस पर भी हम कर रहे हैं. IVF जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाली टेक्नोलॉजी उस पर भी डिपार्टमेंट अभी हमने खासा थोड़ा सा आगे भी चले गए क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द L&D डिपार्टमेंट को वी गोट द 4 बेबीज हमारे प्रोजनी जो हैं थ्रू IVF हमने हमारे भादानगर फार्म जो ओकाड़ा में है उसमें हमने फर्स्ट टाइम इस पे एक बड़ा अच्छा एक पायलट के तौर पे हमने किया और नाउ वी आर गोइंग टू स्केल अप इट. तो एक वो उस पे भी हम खासा इस पे हम काम कर रहे हैं जी. अब आगे अगर खाली ब्रीड इम्प्रूवमेंट हो जाए और एनिमल्स की न्यूट्रिशन पे हम तवज्जो ना दें तो वो भी एक अजीब सी चीज होती है कि आप एक चीज तो कर रहे हैं लेकिन दूसरी को इग्नोर कर रहे हैं. अगर आप एक्सोटिक सीमन लेके आते हैं और सारा कुछ कर रहे हैं और प्रोजनी जो आपके पास आ रही है डेफिनेटली दे रिक्वायर द मोर न्यूट्रिशनल जो उनके रिक्वायरमेंट्स होती हैं और फीड की रिक्वायरमेंट्स हैं. अब उसमें भी पिछले फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स हम उस पर भी खासा काम कर रहे हैं जी. एक तो एक्सोटिक ग्रासेस जो होते हैं जो फॉडर ग्रासेस जो हमने वो इस साल इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने की भी है, उनकी स्टेम्स भी की हैं, दूसरी चीजें सीड्स भी किया अपने फार्म्स के पे भी हम उसको लगा रहे हैं और फार्मर्स को भी दे रहे हैं. हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं कि फार्मर भी इसको लगाए और उसके ऊपर वो भी इसके ऊपर अपना फायदा इससे उठा सके. इसके अलावा साइलेज जो है एंड साइलेज का आपको पता है साइलेज मशीन जो है दिस फर्स्ट टाइम के हमने डिपार्टमेंट ने इस वक्त फार्मर्स को सब्सिडीज के ऊपर साइलेज मशीन्स भी दे रहे हैं. वो इस वक्त उनका सॉरी इतना ज्यादा नंबर नहीं है, हम वो एक तहसील में 12-14 के करीब दे रहे हैं, लेकिन ये पायलट के तौर पे हम कर रहे हैं. मकसद सिर्फ ये कि हम उस न्यूट्रिशन पे भी खासा हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाए. हमारे सहूलत सेंटर बने हुए हैं तमाम पंजाब में हर तहसील के ऊपर और हमने वहाँ पे बाय ऑर्डर से कर दिया हुआ कि वहाँ पे भी छोटी बेल जो है साइलेज की बना के वो भी वहाँ पे हमने रखी हुई है. इसी तरह आप देखें कि सारी चीजें हम कर रहे हैं. डिजीज कंट्रोल एक तीसरा उसका एलिमेंट है. अगर ये आप ब्रीड भी आपने बेहतर कर ली, आपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी आपने पूरी कर ली, लेकिन अगर आप डिजीज कंट्रोल पे और वैक्सीन और बनाने में और उसी चीजों पे आगे नहीं जा रहे
तो मेरा ख्याल वो सारी चीजें फिर वो वहीं पे शायद उतना ना हो सके जितना हम उसको कोशिश कर रहे हैं जी। इस पे भी हमने अपनी तमाम हर डिस्ट्रिक्ट्स में हमने डिजीज डायग्नोस्टिक लैब्स जो हैं उनको भी अपग्रेड कर दिया। अब सारा वहाँ में डिफरेंट जो रिजल्ट्स और हमने टेस्ट करने की सहूलतें वहाँ पे PCR की और दूसरी चीजें हमने वहाँ पे प्रोवाइड की हैं जी, अपग्रेड उनको कर रहे हैं। और एक बकायदा हमने एक इन्फो बना दी है एनिमल डिजीज रिपोर्टिंग एंड सर्वेलेंस की, पूरे पंजाब में बैठ के थ्रू हमारी उस जो एक सॉफ्टवेयर के जरिए हमारे वो सारी वो चीजें पहुंच रही हैं कि डिजीज का पैटर्न क्या है, किस किस एरिया में किस किस्म की डिजीज आ रही है, वहाँ पे हमारे क्या इंटरवेंशन है, हम उसमें क्या कर रहे हैं। तो वो भी इसके साथ साथ वैक्सीन हमारे कहा था कि हम जो प्रिवेंटिव की तरफ ज्यादा जाना चाह रहे हैं रादर देन कि हम क्यूरेटिव की तरफ जाएं। हम चाह रहे हैं कि एनिमल बीमार होने से पहले वैक्सीन जो है उस पर हमारा फोकस है, जिससे कोर पब्लिक गुड जिसमें हम फोकस कर रहे हैं। उसके लिए FMD एक बहुत बड़ा इशू है, आप सब लोगों के माशाल्लाह सब जानते हैं FMD एक बहुत बड़ा इशू है जिसपे और उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन जो है वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा एक चैलेंज है जी, एक बहुत बड़ा इशू है। वी आर प्रोड्यूसिंग जस्ट 8 to 9 मिलियन FMD डोजेज जो हैं पर एनएम हम इसको प्रोड्यूस कर, रादर वी रिक्वायर्ड मोर देन 100 मिलियन डोजेज एनुअल हमें चाहिए सिर्फ ओनली फॉर पंजाब जी। इफ यू टॉक अबाउट द पाकिस्तान तो हमें वी रिक्वायर मोर देन 300 मिलियन डोजेज। तो हमारी एक छोटी सी फैसिलिटी है यहाँ पे लाहौर में जो FMD रिसर्च सेंटर है, वी आर ट्राइंग टू अपग्रेड इट थ्रू चाइनीज असिस्टेंस और CPAC में भी हमने उसको फ्लोट किया हुआ है और अब वो खासा थोड़ा सा आगे भी चला गया। चाइनीज ने दे हैव विजिटेड दिस फैसिलिटी और उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट शो किया कि जी बिल्कुल वो भी करना चाह रहे हैं। तो ये अगर इस पे USAID ने फिजिबिलिटी भी बनाई हुई है और बहुत अच्छा उन्होंने कहा था वायबल इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट है। अराउंड 6-7 बिलियन पाक रुपीज का ये प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसमें पंजाब की हद तक हम कोशिश करेंगे कि 100 मिलियन के डोजेज जो है वो हम उसको थ्रू सस्पेंशन कल्चर टेक्नोलॉजी, जो कि नई टेक्नोलॉजी अभी जो हम बना रहे हैं वो स्टेशनरी कल्चर पे जा रही है। उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, कंटेमिनेशन होती है, उसकी एफिकेसी के इश्यूज आते हैं और उसमें एक लिमिटेड स्केल पे आप बना सकते होते हैं। तो हम वो सस्पेंशन कल्चर के ऊपर भी अभी इसको अपग्रेड करने जा रहे हैं। और इस लास्ट हमारे यूनिवर्सिटी जो वेटरनरी एनिमल साइंसेज है उसको भी हमने पिछले दिनों एक प्रोजेक्ट फंड करके दिया। अपने पत्तों की जो उनका कैंपस है वहाँ पे जी उन्होंने इसी टेक्नोलॉजी सस्पेंशन पे उन्होंने कल्चर पे उन्होंने एक प्रोजेक्ट अपने बनाया। मशीनरी उनकी सारी इंस्टॉल हो गई है, उनके रिएक्टर्स भी तकरीबन सारे लग गए हैं। तो अब उसकी हमने उसको ऑपरेशनलाइज करना है और उम्मीद है कि उसमें भी हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे और उसमें तकरीबन 5-6 मिलियन डोजेज जो है हम एनुअली उस पर भी कर लेंगे। बाकी हम आपको पता है साउथ में हमने डिजीज फ्री जोन बहावलपुर डिवीजन पूरे को हमने चोलिस्तान एरिया को बनाने के लिए वो वहाँ पे जो FMD वैक्सीन हम कर रहे हैं वो हम सारी इंपोर्ट करते हैं थ्रू FAO, वो हमें रशिया से इंपोर्ट करके देते हैं वो। तो लेकिन वो एक हल नहीं है कि आप इंपोर्ट करते जाएं बिलियन रुपए के हर साल, जब तक अंटिल हमारी अपनी फैसिलिटी अपग्रेड ना होगा जी। तो इसके अलावा जो फाइनली जी ये सारी चीजें कर लें लेकिन मार्केटिंग को हम मिस कर दें तो फिर भी मेरा नहीं ख्याल कि चीजें हम उस नतीजे पे पहुंच जाएंगे। तो मार्केटिंग इज प्योरली प्राइवेट सेक्टर डोमेन जी, इसमें तो कोई बात दूसरी हो ही नहीं सकते। इट इज वेरी क्लियर कि ये उन्हीं का हमने तो फैसिलिटेशन है गवर्नमेंट में रूल्स लॉज और इस तरह की सारी चीजों में जो उनको चाहिए होता है उसको फैसिलिटेशन है, लेकिन मार्केटिंग का जो सारा एलिमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर की। हम तो एज एक छोटा सा पायलट के तौर पे अभी हमने गुजरांवाला डिवीजन की 6 तहसीलों पे अपने एक छोटा सा पायलट शुरू किया जी। वहाँ पे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन बना के और उनको हमने छोटी छोटी चीजें भी प्रोवाइड कर दी हैं, छोटे मिल्क कंटेनर भी दे दिए हैं, वहाँ पे चिलर दे दिए हैं और एनालाइजर दे दिए हैं, उनके एक एसोसिएशन बना दिया और मिल्किंग पैकिंग मशीन्स भी छोटी छोटी दे दी हैं। वो वहाँ पे अपना मिल्क कलेक्ट कर रहे हैं सारे और वहाँ पे खुद ही पैक कर रहे हैं, पाउच में वो पैक करके तो वो मार्केट भी उसको कर रहे हैं। उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया हमें, ये एक पायलट के तौर पे। अब उसको आप स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दूसरे डिविजन्स में भी इसको थोड़ा सा करें और वहाँ पे भी ये करें, लेकिन अल्टीमेटली ये सारा जो है प्राइवेट सेक्टर ही इसमें मेन उसमें प्लेयर है जी, उन्होंने इसमें सारा कुछ करना है। तो बस ये मैं सॉरी मेरी लंबी बात हो गई, मैं आपको ये कुछ चीजें थी जो हम प्राइवेट सेक्टर में के साथ कुछ हम अभी मैं सुन रहा था कि कुछ फ्रेंड्स बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क पे अभी वो गवर्नमेंट क्या तो रही है, लेकिन उस तरह अभी देखिए आपके सबका नॉलेज में 2022 में 23 हमने रखी हुई थी कि जी उसमें पंजाब में जो लूज मिल्क है उस पर वो नहीं जाएंगे, हम उसमें सारा पैक मिल्क में जाएंगे। तो उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि लोगों की मैं कहता हूँ अवेयरनेस जब तक लोगों को नहीं होगी, जब लोगों को हम इसको एजुकेट नहीं करेंगे कि एक पैक्ड दूध के क्या क्या फायदे होते हैं,
तो उस वक्त तक शायद लोगों को एक यहाँ पे एक सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, लोग कहते हैं जी हमने वो फ्रेश मिल्क लेना है और वो अच्छा होता है, लेकिन लोगों के अब देखें जो मिनरल वाटर पीते हैं, अब चंद साल पहले इसका तस्वर नहीं था कि हमारे यहाँ पे भी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसको हमने अवेयरनेस आई, लोग सारे घरों में भी अपने सारे उसी पर आ गए। तो अगर इस पे भी अगर हमने आना है, पैस्चराइजेशन के ऊपर भी आना, और आना पड़ेगा अल्टीमेटली, उसके बाद बगैर हल ही कोई नहीं है। तो इसलिए अवेयरनेस और फार्मर्स को, लोगों को बताना ये बहुत जरूरी है, और आजकल चल भी रहा है। तो फूड अथॉरिटी जो है, पंजाब फूड अथॉरिटी, वो इस पे काम कर रही है, जिसके पायलट के तौर पे करने के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कर लें, किसी एक डिस्ट्रिक्ट के फिलहाल किसी एक वो एरिया में कर लें, तो वो अभी आप सबके इल्म में है, वो इसी तरह चीजें चल रही हैं जी। तो थैंक यू सर, सॉरी मेरी बात लंबी हो गई जी, बहुत शुक्रिया जी फॉर पेशेंस फॉर हेयरिंग मी जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, थैंक यू सर, वेरी हेल्पफुल, बहुत इंसाइटफुल आपके कमेंट्स। अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में जाने वाले हैं, मगर उससे पहले मेरा एक सवाल खालिद साहब टू यू इज दैट जो फीड एक्सपोर्ट है बज़ाहिरन उस पे गवर्नमेंट ने वो अलाउ की हुई है, इसका क्या लॉजिक है और पंजाब गवर्नमेंट इसको कैसे देख रही है? जी फीड की एक्सपोर्ट की बात करें सर? जी फीड एक्सपोर्ट। नहीं, फीड से मुराद आपकी किस चीज की फीड के बाद, क्या हे एंड साइलेज की बात कर रहे हैं या आप वनडे की, किसकी आप बात कर रहे हैं? तो ओवरऑल जो साइलेज वगैरह है, जो आपके मतलब वीट से भी आपका जो हेयर स्टैक वगैरह वो होता है, निकलता है, तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मालूम होता है कि रिसेंटली एज अ पॉलिसी एक्सपोर्ट अलाउ कर दी है, जिसकी वजह से मार्केट में फीड की प्राइस बढ़ गई है, इज दैट ट्रू? वो वे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब गवर्नमेंट ने फेडरल, दिस इज क्योंकि ये डोमेन है फेडरल गवर्नमेंट का जी, एक्सपोर्ट वो भी करना, तो प्रोविंस से वो उनके कंसल्टेशन तो चलती रहते हैं, लेकिन अभी उसका क्वांटम इतना बड़ा नहीं है। अभी वो हमारी साइलेज भी जा रही है, हे भी जा रही है, जीसीसी कंट्रीज में वहां पे कुछ चंद में वहां पे जा रही है, लेकिन अब ये देखें कि अभी चंद साल पहले तक हमारे यहाँ पे साइलेज बनाने का कॉन्सेप्ट जो है, हमारे पंजाब लाइवस्टॉक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यावर साहब हमारे मोहतरम बैठे हैं, इनके दौर में भी इन्होंने बड़ी कोशिश की, लाइवस्टॉक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में इंट्रोड्यूस भी कराया। उसकी वजह से ही, उसी एक इंटरवेंशन की वजह से जो अब वो पंजाब में तकरीबन 80-90 के करीब जो है प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं वो साइलेज में अब वो काम आ गए हैं जी, और बड़ी तेजी से लोग इस तरफ आ रहे हैं, बड़ा उनको प्रॉफिटेबल ये एक बिजनेस नजर आ रहा है, और उसमें डेफिनेटली एक्सपोर्ट में भी कुछ लोग गए हुए हैं, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि शायद उस लेवल पे अभी वो नहीं, अगर वो एक्सपोर्ट पे जा भी रहे हैं तो लोकली और भी प्लेयर जो है वो मार्केट में आई जा रहे हैं। तो अगर एक्सपोर्ट को वैसे मेरे तो ख्याल है रोकना तो नहीं चाहिए, अगर कोई समझता है कि मेरे पास इस क्वालिटी की चीज है और इतनी क्वांटिटी की चीज है कि मैं वो भी कर सकूं, तो वो भी करना चाहिए। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट में बेसिकली इसमें इतना हमारा कोई रोल या कंट्रीब्यूशन होता नहीं है एक्सपोर्ट में, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का ज्यादा इसमें होता है और फेडरल गवर्नमेंट ही इसमें करती है। लेकिन वक्तन फक्तन अगर हमसे कोई कमेंट्स लेते हैं तो हम जरूर देते हैं, और हमारे कमेंट्स वही होते हैं जो सेक्टर डेयरी सेक्टर की जो डिमांड्स होती हैं, जैसे आप लोग चाह रहे होते हैं उसी तरह की हम उनको फीडबैक देते हैं जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, दैट वाज बहुत हेल्पफुल आपने जवाब दिया। अच्छा, अभी कुछ और सवाल जो आए हुए हैं मैं वो आगे पोस्ट करना चाहूंगा। एक सवाल ये आया है कि डेयरी फार्मर्स की कोई रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ एन एसोसिएशन, और हमारे यहाँ फार्मर्स जो है ना वो कोऑपरेटिव मॉडल क्यों नहीं फॉलो कर रहे? तो राव उस्मान गनी साहब, आप इस पे कुछ फरमाना चाहेंगे? बेसिकली उसमें बुनियादी बात वही है जो मैं पहले कर रहा था कि लोग मिलके अगर काम करना चाहें तो उनके पास कोई ऐसा वे आउट नहीं है कि वो उसको किस तरीके से जो है वो उसका हिसाब किताब रखें, उसको कैसे मैनेज करें। बुनियादी मसला मैं जो सारी गुफ्तगू में आप सब हज़रात ने किया, लेकिन मेरा जो कंसर्निंग पॉइंट है मेरे लेवल के ऊपर, मेरे जैसे फार्मर के लेवल के ऊपर, वो मसला ये है कि हम सब मिलके काम करने का कोई मॉडल डिजाइन नहीं कर पाते कि हम किस तरीके से एप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, कैसे कॉस्टिंग करेंगे, किस तरीके किस फेज में जाके क्या हो रहा होगा,
मार्केट की फ्लक्चुएशंस को कैसे मैनेज करेंगे। तो बेसिकली इस सारी चीज़ों को देखते हुए हम जो है ना ये काम नहीं कर पाते हैं। तो फिर दूसरी बात ये है कि उसके रिस्क फैक्टर को जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाते कि जो मैनेजिंग पार्टनर्स हैं वो कैसे आगे बढ़े। तो इसमें दूसरी चीज अप्रोच ये है कि आप लोनिंग की तरफ जाएं। अगर आपने कॉर्पोरेट मॉडल्स को अपनाना है तो लोन्स की कैप्स हैं, छोटी कैप्स हैं। मिसाल के तौर पे आपको डेयरी सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती हैं। तो इस वक्त जो मैक्सिमम अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान की बात करें तो वो 25 मिलियन की कैप है, इसके ऊपर आपको अलाउ नहीं है। इसी तरह से मशीनरी के अंदर भी कैप्स हैं। तो बेसिकली जब तक आपके पास फंड्स उस लेवल के अवेलेबल ना हो तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में मूव नहीं कर सकते, उस मॉडल को नहीं अपना सकते। तो यही एक बात है कि इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और सवाल है कि जी लीडिंग डेयरी प्रोसेसर्स इन व्हाट इज द रोल ऑफ लीडिंग डेयरी प्रोसेसर्स इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंगस्ट डेयरी फार्मर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मिल्क यील्ड्स। अली खान साहब, ये आप इसका जवाब देना चाहेंगे? इज फ्रीजलैंड कैंपिना helping the farmers in any way? जी, excellent question. So both ourselves and Nestle have a dairy development department. ज़्यादातर हम काम करते हैं with medium sized farmers and आमिर साहब ने अपनी बताया कि उनकी yields are माशाल्लाह at global standards. We've been able to improve the yields of these medium-sized farmers, let's say between 50 and 250 animals. So we've been able to increase their yields, up to about 20 to 25 liters as well per day. As I said, the average yield in Pakistan is 5 to 6 liters. So इन लोगों को हमने काफी help किया है to get to between 20 and 25. And we provide them with all the technology, we provide them with the best farming practices. तो इनको हम assist करते हैं। उससे नीचे जाना जो है is a little bit difficult, जो आपके backyard farmers होते हैं, because उनके पास resources नहीं होती to bring about those improvements either in terms of breed or in terms of feed or in terms of infrastructure. जो backyard farmers हैं उनके पास ये infrastructure ही नहीं होता, ये resources ही नहीं होती कि ये improve करें to any substantial level. But what we've seen is with our interventions, what we call these progressive farmers, they have they improve their yields by about 5 to 7% per annum. तो भाई मेरा क्वेश्चन अगर आप अलाउ करें तो जी कर सकता हूँ? जी प्लीज फरमाइए उस्मान साहब। मेरी इसमें सिर्फ एक जो बात है जिसके ऊपर मैं फोकस करवाना चाह रहा हूँ कि देखें, जैसे कि हम मिल्क यील्ड बढ़ाने के हवाले से बात कर रहे हैं तो हम साथ में ये भी कहते हैं कि मिल्क यील्ड डिपेंड करती है 3 चीज़ों के ऊपर। कि एक जेनेटिक्स के ऊपर आप कह लें कि आपकी जेनेटिक्स जो है वो आपकी अच्छी हो जिसकी वजह से आपकी दूध बेहतर होता है। दूसरा माहौल के ऊपर, तीसरा खुराक के ऊपर, चौथा मैनेजमेंट को एक आप फैक्टर काउंट कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे हम जेनेटिक्स के ऊपर तो हमारी सारी कंपनीज और वो फोकस हमारा है। लेकिन हुआ ये है कि 2008 में यूएस एड के जरिए से सरगोदा में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, जिसके जरिए से हमारी ब्रीड जो है, लोकल ब्रीड, उसको इम्प्रूव करके बेहतर बनाया गया। उसके अंदर पोटेंशियल है जिसे हम क्रॉस ब्रीड कहते हैं। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है कि वो ब्रीड को हम अच्छा एनवायरनमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा माहौल नहीं दे पा रहे हैं, बेहतर शेड नहीं दे पा रहे हैं। देखें, जेनेटिक्स के ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं, लाख रुपया दे रहे हैं एक एनिमल के ऊपर, लेकिन हम अच्छा माहौल बनाने के हवाले से, क्लीनिंग इजी करने के हवाले से, मैकेनाइजेशन इन्वॉल्व करने के हवाले से, ये सारे फैक्टर्स भी चले ज्यादा नहीं तो 40% जरूर इम्पैक्ट डालेंगे हमारी ईल्ड को बढ़ाने के हवाले से। ये मेरा सवाल है कि इसके ऊपर हम क्यों नहीं काम करते, हम सिर्फ जेनेटिक्स की बात क्यों करते हैं? अली साहब, आप इस पे कुछ फरमाना चाहेंगे? इसमें अगेन एज प्रोसेसर्स हम लोग फार्मर्स को ट्रेनिंग जरूर देते हैं, राइट? लेकिन
जहाँ पे मसला आता है ना वो आता है फार्मर्स के लिए फाइनेंस करना इंफ्रास्ट्रक्चर को। एंड जहाँ जो हमारी एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो फाइनेंशियल जो फंड्स है ना वो फार्मर्स के पास इन चीज़ों के लिए अवेलेबल नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए। एंड बैंक्स आर unwilling to finance these sort of things. So we are quite happy to provide the know-how and the knowledge, and which we do, both ourselves and Nestle. But the farmer is more interested in getting better animals and not really that interested in animal care. So Rao Saab is correct कि ये ज़्यादा फोकस जो है वो ब्रीड इम्प्रूवमेंट की तरफ है, लेकिन एनिमल केयर, एनिमल वेलफेयर की तरफ जो है इतना फोकस नहीं है। But it's not from the processors viewpoint. हम लोग तो ये टेक्नोलॉजी, ये नो हाउ जरूर पास ऑन करते हैं टू फार्मर्स, बट अनफॉर्चुनेटली फार्मर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग बेटर एनिमल्स। दे थिंक कि बेहतर एनिमल होगा तो उसकी यील्ड होगी। दैट इज ट्रू इन परहैप्स इन द फर्स्ट ईयर, बट उसके बाद वो इंक्रीजिंगली अनफॉर्चुनेटली डिटेरियोरेट करता है। But I think may I also add that I think government will have a good role to play in terms of improving the technology and also overall farm management. So I think let's leave it at that. एक और सवाल जो है, it's on alternative energy. मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, थोड़ी सी ना इसमें हमारी अभी एक फोरम अच्छा मिला हुआ है तो हमें बात करनी चाहिए। तो उसमें सिर्फ हमारी सजेशन ये है कि बाकी क्रॉस टॉक नहीं है, मकसद सजेशन ये है कि ठीक है फाइनेंस के ऊपर ना जाएं, लेकिन इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि जैसे पहले हुआ करती थी कि अगर आप कैनोपी वाला शेड बनाते हैं, अगर आप TMR यूज करते हैं तो हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, पर लीटर इंसेंटिव्स जो है उनके सेपरेटली होने चाहिए। इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो इन चीजों के हवाले से फाइनेंस के ऊपर अगर काम कर ले बैंक्स के साथ, अब क्योंकि वो मैंने इस वक्त जो है कामयाब जवान के अंदर कुछ फाइनेंस लिया बैंक से, तो उसमें बड़ी अच्छी एक रही कि उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी के जरिए से एनिमल को इंश्योर्ड किया और प्रॉपर टैगिंग की, और उसके बाद 1 ईयर के बाद ऑडिट किया, तो वो हम उसमें सक्सेसफुली मतलब उन्हें हमने सेटिस्फाई किया। और डेयरी सेक्टर के अंदर मैं कहता हूँ आरिफ वाला में शायद हमने बड़ी जद्दोजहद करके अपने आप को एग्रीकल्चर से निकल के उन्हें गिरवाने में कामयाब हुए, क्योंकि बैंक SMEs को फाइनेंस करने में खुश रहते हैं और एग्री सेक्टर के अंदर फाइनेंस इतनी आसानी से नहीं करते। तो ये एक बात है, सजेशन है। राव साहब, आपको बहुत खुशी होगी ये जान के कि हम लोग काम कर रहे हैं अब डिफरेंट बैंक्स के साथ, बैंक ऑफ पंजाब, हबीब बैंक, एंड ये बैंक्स जो हैं एंड सम ऑफ देम हैव बीन पुश्ड बाय द स्टेट बैंक आल्सो, काफी ज्यादा ये अब कमिट कर रहे हैं टुवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड टुवर्ड्स डेयरी फार्मिंग इन पर्टिकुलर। और हम as a company, and I'm sure Nestle will do the same, we will bring packages to the farmers in banks के through बड़े reasonable rates पे to finance dairy farming। तो एक तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट का काफी अब इस पे एम्फोसिस है फार्मर्स को और डेयरी फार्मर्स को फाइनेंस करना। दूसरा, as an industry and as a company we are setting up the with US, और ये भी बात हुई थी इनके कैंपस की, पत्तों की कैंपस की, we are setting up the Pakistan Netherlands Dairy Development Center, and उसके थ्रू इंशाल्लाह हम फार्मर्स के लिए इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे जो हम फार्मर्स को एजुकेट करेंगे ऑन बेटर फार्म मैनेजमेंट। सो इंशाल्लाह we will take this we will almost take it viral in terms of educating farmers, training farmers। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है हमारा in helping farmers। That's all wonderful news. Time-wise, we have time for 2 more questions. I'll pick those out, and after that, we'll move to the closing. One question that has come up is on alternative energy and using biogas to produce energy. Amer, Abdullah Saab, is there any experience that Sapphire might want to share, or do you have any comments on this topic? असल में इस बायोगैस में तो हमने पहले बहुत सारी वर्किंग की, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी। यहाँ कुछ फार्म जिस तरह हम लोग सैंड यूज़ करते हैं फॉर बेडिंग, जिसकी वजह से हमने जितने भी कंसल्टेंट को इन्वॉल्व किया उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी ऑन सेपरेटिंग द सैंड फ्रॉम द मैन्योर। कुछ फार्म्स ने वो फोम मैट्रेसेस यूज़ किए एज बेडिंग,
और उनको बहुत सारा, बिकॉज यहाँ गर्मियों में गर्मी बहुत हो जाती है, तो काउ कंफर्ट बहुत अफेक्ट हुआ, इट डिड नॉट वर्क फॉर देम, और उन्होंने फिर उसको टोटल रिमूव करके, और उन्होंने बेडिंग जो इसलिए यूज की थी ताकि बिकॉज ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव एनर्जी, ताकि सैंड ना मिक्स हो मैन्योर के साथ, सो वो वर्क नहीं किया बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। सो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, और इसमें जिन्होंने थोड़ा बहुत किया भी है, इट हैज नॉट वर्क। द मेन रीजन इज बिकॉज ऑफ द सैंड। ऑल्टरनेटिव एनर्जी में फार्म्स, ऑलमोस्ट जो बड़े फार्म्स सारों ने सोलर एनर्जी पे सबने लगा लिया है, और वो इट्स रियली हेल्पिंग है, क्योंकि इसमें फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है, इसमें गर्मियों में ज़्यादा बिजली चाहिए होती है और सर्दियों में वैसे ही बिजली कम रिक्वायरमेंट होती है, तो सोलर वर्क्स वेरी वेल। Thank you so much, Ji. That's very insightful. I want to come back to Awais. Awais, I recall you had once spoken about interest or the work you've done on building cooperatives or getting the farmers more involved. Is there something you want to say about that specifically? Because we had a question on farmer cooperatives. Yes, thanks, South, because a lot of people ask me when in the agriculture sector that what prevents us from actually finding the cooperative. I think it's a time when we are moving towards that, because in India, if you look at the land reforms were introduced in 1958, and the average land holding over there is 1.5 acres. So they are forced to move into the cooperative model. Over here, it has taken time, but inheritance has taken care of it. So the land size holding is getting smaller and smaller. And probably next 4 to 5 years, you will see more of these phenomena coming up, because people will not be able to afford it. So by force, they will have to come together to form cooperatives, which will be actually, I think, a better thing, because they will be having a more bargaining power over the suppliers, with the financial sector as well, because in India, they all deal with cooperatives. And it's also good for the farmers because they can sell it in a bulk quantity. And coming back to the Usman Saab question, earlier one was, I think what Ali Khan also was referring, because they were partner in it. We had done these dairy hub program with all the dairy big processors had done in about 7-8 years ago. It was just simple hygiene, simple management of the herd at the farm level, which increased the yield from 25 to 30% as well. So yes, there are a lot of areas of significance coming in as well. But this cooperative part, I think it's gonna be our, we'll not be able to avoid it. It will be there. If we charter it, I think we'll probably be able to get better outcome of it if we can get into that mode as well. Definitely. That's great. That's good to know. So we won't be able to take more questions. I think we've run out of our Q&A time. With that, I'd like to pass it along to Syed Yawar Ali Saab for the closing remarks and bringing it all together for us. Thank you. Thank you, Saud. You've given me 5 minutes to cover 11.5% of Pakistan GDP. Absolutely. But I must say that Pakistan Business Council has produced one of its best reports. It covered all the different areas. Enjoyed reading it, and let's hope we can take it forward. I will limit myself to a few thrusts. A lot has been talked about, long-term planning, and the dairy sector needs a long-term plan, maybe about 10 years. And isme 2-3 things are important. One is to define what is the role of the federal government. Secondly, provincial government, because now livestock and agriculture are provincial subject, and then the private sector. And for example, we feel that the government should get out of commercial activity, selling semen, selling feed, because it competes with the private sector. So that's one of the recommendations. Secondly, it needs to be adequately resourced. Now, there is, I don't know how much, 500 or million rupees worth of subsidy. How much does it go to the dairy sector? Maybe even not 5 billion. So it should be in line with what the GDP is. That's our second recommendation. And then I would like to say that what is important is to make the dairy farming supply chain profitable, starting from farmer all the way up to the processing.
And there are many ways of doing it. So one of the things that, and this is what the plan should do, to make this whole supply chain, it means, sensors, it needs animal health, it needs research, and so on. And one or two initiatives that we have taken, I'd just like to share with the members here. Pakistan Dairy Association has formed a milk value chain development committee, which starts from the farmer all the way to where the milk is delivered to the factory. And this is exactly what we are doing, is to how to make dairy supply chain profitable. And we do have various subjects. We share best practices, and I think one of our meetings is held tomorrow. And these are meant, today it's meant for the dairy, our members, but we can invite some other guests as well. Secondly, the Secretary Saab talked about sex semen. I think this is a key to the development of the dairy sector. And India has actually now 5 facilities in which they produce sex semen, and a lot of that is subsidized by their provinces. So I think that we have a good model to follow. How they do it, we can also. Secondly, I'd also like to bring this to the notice of our corporate farmers, that they need to now form a Holstein Association of Pakistan. I think it was mentioned by one of the members, in which, and this can follow a pattern of many other associations around the world, but this will actually help in identifying, good quality animals, also standards. So there's a whole process in that. Then lastly, I'd just like to mention, I think someone mentioned about US aid. We at 1996, Nestle set up a Dairy and Rural Development Foundation, in which the idea was to work with small farmers and improve their yield through crossbreeding. And we had a 5-year program with the USAID, in which we trained 2,000 artificial inseminators. They were each given a Honda CD70 plus equipment plus free semen, and they became self-employed. And this has worked very well. Secondly, we also trained 9,000 dairy farmers. Nestle has a dairy farm, a training farm in Pattoki. So they came there, they lived there, they worked there, and they got both classroom as well as practical training, because this is a skill that needs to be developed. And what we then realized was that the small farmers who came there, 15, 20 animals, they could not replicate it. So we had a second project with the USAID, where we took 100 of these farmers who were trained out of 9,000, and we improved their farm, and we trained the rest of the farmers on their farm. And that helped, because when the farmers in the villages saw that his neighbor could do it, he could also do it too. So I think we have a model that could also be followed. Mentioning about biogas, in this program that we did, with the help of USAID, we also set up a biogas plant in Bahadurgarh. And the design from that came from Wisconsin. Wisconsin is a very cold state. Biogas needs a certain amount of temperature to start fermenting and starting. So they had actually a heating system device. So that is also available if anybody would like to benefit from it. Finally, I would just like to say that the export part, I think Ali Ahmed mentioned that Pakistan needs to become globally competitive in dairy. And the plan that Pakistan should build for the next few years should be based on that premise. How do we become globally competitive? Thank you. Thank you very much, Yawar Saab, for the closing remarks. With that, we've come to the end of this webinar. I thank you on behalf of the Pakistan Business Council for joining us today and taking time out to share your views and insights.
Thank you and have a good afternoon. Bye-bye. Allah Hafiz.